Hello, dear students. Good morning to everyone. Welcome to DSEJ home classes. And today uh, we are going to take last part of your poem, "An Evening Wet with Train." We have taken first and second part of this poem. We had broken this poem in three parts. Due to this slow network, I'm not able to upload all the parts. Jointly. I will try to upload these parts in one video, but this is third part of this video, "An Evening Wet with Train." As you know, this written poem had been written by Vedpal Deepji, uh, a Dogri poet, and coincidentally today this is coincidence, you can say that in class ninth I had taken Cart Driver, that also had been written by Dogri writer Padma Sajdev. And uh, first of all, we will make reading of this last part. In childhood, I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return. How to call back time past and gone? The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadow of trees rest in the dark, think as some passing cloud cast a shadow over hills. There is activity in the house, lit with electric bulbs. Moonlight laughs holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Let light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. So we will now try to analyze this poem verse by verse, line by line, और आई होप कि आपको ये समझ आए अच्छी तरीके से. इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्ट यार्ड. तो दिस पोएम इज अबाउट डिप्रेशन. दैट पोएम sorrow state of this poet, that he is very sad in his old age. He has compared his old age with evening of my life. That means last stage of the day, last stage of his life. In childhood, I stood alone in my courtyard. So he said कि when I was young, I stood alone in my courtyard. That means कि he has very good memory of past. He want to keep that memory. वो अपनी जो good memory है उसको रखना चाहता है कि वो अकेले कोर्टयार्ड में खड़ा रहता था. Waves and waves of air brought the sound of cymbals. तो ये जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, तो इसकी जो जैसे इसकी धुनें जब ये बजता है तो इसकी जो आवाज़ आती है, ऐसी ही आवाज़ जो है उस हवा की उस वक्त आती थी. तो उसको मतलब ये खूबसूरत नज़ारा जो है उसको याद है. वी रिग्रेट, अब इसे ही इज़ वेरी सेड दैट द डे इज गॉन बाई डोंट रिटर्न. कि दैट चाइल्डहुड, दैट द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ही हैज़ मेमोरीज विद हिम, बट दैट टाइम cannot return. We know, you know, everyone know that the time gone cannot be returned. Don't return that. So he said for that, he has regret for that his childhood days cannot now return. So it is not कि वो मरना चाहता है, कि वो तो जीना चाहता है, लेकिन अब उसकी स्टेज ऐसी आ गई है कि अब वो जो है ऐसी स्टेज पे पहुंचा है कि जहाँ पर अब उसे जो है डेथ नजर आती है. हाउ टू कॉल बैक टाइम पास हैड गॉन, द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लेप ऑफ नाइट स्लोली. क्या बोलता है? हाउ टू कॉल बैक टाइम पास हैड गॉन, जो टाइम चले गया क्या हम उसको वापस बुला सकते हैं? द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप. दैट मीन्स दैट इवनिंग, लास्ट स्टेज ऑफ द डे, लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, prepares to go to sleep. Sleep means death. Sleep means here to sleep in grave in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. That means कि this world, this whole world, this whole universe becoming one for that after death. That for the poet, the shadows, the ground shadows of trees rest in the dark trank. Shadows of trees, the shadow of these trees, because it's evening time. तो अभी जो shadows है trees के वो भी अब गायब हो गए हैं. As some passing cloud cast shadow over hills, कि some passing clouds हैं ऊपर से और वो shadow डाल रहे हैं इन hills के ऊपर, क्योंकि evening time है.
there is activity in the house lit with electric bulbs. So he's very it one side we can say that he is that he's tired, some he's exhausted, he don't want to live now more. But at the other side we can say that he's there is activity in the house. He want to say that there is activity, people are enjoying, people have fun, people are very happy, and that they are doing their activities in the house. And there are light in the house, there is electric bulbs that lighting in the house, moonlight. यहाँ पर एक और एक वो बताना चाहता है, एक रोमांटिक एक टर्न देता है पोइट को, पोएम को, क्या मूनलाइट, चांद की रोशनी है, यानी एक खूबसूरत नज़ारा ये बता रहा है. बट इट लॉफ्स होल्डिंग द हैम ऑफ द मून. अभी क्या बताता है कि मून लाइट लॉफ्स. अब यहाँ पर क्या है, मून लाइट, चांद कभी हंसता है क्या, तो यहाँ पर भी चांद एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है. होल्डिंग द हैम ऑफ द मून, यानी हैम मीन्स एज ऑफ द मून. तो वहाँ पर एक चांद की जो रोशनी है वो भी इसके ऊपर हंस रही है, उसको ऐसा लग रहा है. दैट मून लाइट ऑल्सो लॉफ्स एट हिम. तो वन साइड he is very romantic and other side he is very depressed. One side he loves to be very that people are enjoying, people are having fun, people are positive, and they are doing their day-to-day activities. So he is also interested in that. And other side, because of that old age, he has come to end of his life, last stage of his life. Where is my destination, where is the hurry? So again there that rhetorical questions had been used, this poetic device had been used. Where is my destination, मेरी मंजिल कहाँ, where is the hurry, अब जल्दी क्या है. Light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. कि एक modest inn में, modest क्या होता है, न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी, एक inn में वहाँ पर एक जहाँ पर अर्थन लैंप जल रहा है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है. तो अब इसको आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि मॉडेस्ट इन यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, कि एक आप बोल सकते हैं कि ग्रेव जो है मेरा इंतज़ार कर रही है. एंड और ये लास्ट वाली लाइन जो इस पोएम की थी. तो हमने बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, वेयर इज़ द हरी, some rhetorical questions had been used. If you can see in this lines, moonlight laughs at me. So that means laughs. When moonlight laughs, that you can say it is personification. How to call back time pass had evening prepares to go to sleep. Here again personification had been used कि इवनिंग जो है नींद करने जा रही है, रात जो है नींद करने जा रही है. तो that also had been used, personification had been used in this line also. Yes, as some passing clouds, though just as the sky's feet, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिली इस लाइन में यूज किया, जस्ट एज द स्काइज फीट टचिंग द ग्राउंड, टच द ग्राउंड. तो यहाँ पर भी सिमिली का यूज हुआ है. ठीक है, तो बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस इस स्टेंजाज में भी यूज हुआ है. तो इस पूरी पोएम की जो है, जो पूरी पोएम हमने पढ़ी, इसकी जो टोन थी वो एक एलेजिक यानी एक सॉरोफुल थी, नॉस्टैल्जिक यानी एक अनहैप्पी टोन इस पूरी पोएम की रही है, वेरी सैड टोन इस पोएम की रही है. पर्सोनिफिकेशन इस स्टैंजा जो आज हमने पढ़ा इसमें कौन कौन से यूज हुए, द इवनिंग प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, मून लाइट लॉफ्स होल्डिंग द हैम ऑफ द मून. सिमिलरली कौन कौन से यूज दी, एज द स्काइज फीट टच द ग्राउंड, शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्कनेस, एज सम पासिंग क्लाउड कास्ट अ शेडो ओवर हिल्स. रियोटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से यूज दिए, वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वेयर इज द हरी. एलिट्रेशन, स्लाउली, सॉफ्टली, जस्ट इज द स्काई. तो स्लाउली में भी एस का यूज हुआ है, सॉफ्टली में भी एस का यूज हुआ है बिगिनिंग में, स्काई में भी एस का यूज हुआ है. तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है. तो पूरी पोएम की जो है समरी हमारे पास निकल के आती है. एन इवनिंग वेट विद रेन, कंपोज बाय एमिनेंट डोगरी राइटर वेदपाल दीप जी.
He was born in 1929 and died in 1995. Is a this Dogri poem was translated by into English by Shivnath. The poem expressed the poet's sadness, hopelessness, and depression when he walks through a lane in a evening wet with rain. There is perfect silence all around, and everything is wet with rain. The evening is giving way to night and almost all activities have come to halt because of that rain हो रही है तो पूरा रुक गया है चारा पूरा system. He has lost all hope in the evening of his life, which means that he has reached the last stage of his life and it has filled his old age with darkness. उसकी जो old age जो है fill हुई है किसके साथ, अंधेरे के साथ. So he is not in position to decide whether he should stop walking or keep going in the rain. तो वो रुके या चले इस बारिश में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. रेन वाटर इज सीपिंग थ्रू हिज शूज विच हैज टर्न हिज फीट कोल्ड एंड ही फील्स फेवरिश. या तो उसे बहुत ठंडी लगी है या तो उसे बुखार ऐसा लग रहा है. द ग्राउंड इज स्लिपरी एंड देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. वो खड़ा नहीं रह सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता. एंड देयर इज डिप्रेशन फ्रॉम ऑल साइड. हिज माइंड इज एग्जॉस्टेड, ही इज and his heart is dejected, so he looks for some support to rest. यानी रेस्ट करना. अब ये रेस्ट मतलब क्या है कि डेथ. इन दिस पोएम ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. तो वो अपने बचपन की याद भी कर रहा है कि मेरे बचपन में कुछ यादें, वो कुछ मेंशन किए हैं इसमें कि जब वो अकेले कहाँ पर कोर्ट यार्ड में खड़ा होता था और वो म्यूज़िक सुनता था, वो सिम्बल्स का म्यूज़िक उसके कानों में आता था, वो उसके एक कूल ब्रीज वहाँ पे आती थी और उसका हर्ट जो है इज फिल्ड विद जॉय. इट वाज टाइम व्हेन हिज लाइफ वाज फुल ऑफ जॉय एंड होप एंड फ्री ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तब वो बहुत खुश था, जिम्मेदारियों से दूर था. बट ही रिग्रेट, फिर उसके अफसोस हो रहा है कि डेज गॉन जो है अभी रिटर्न नहीं होते. वो सैड फील करता है, डिसपॉइंटेड फील करता है. He finds no way to call the times back which are past and gone, so the clouds of despair and hopelessness have gathered in his mind. Although there is a light of electric bulb, वो देखता है house indicating some ongoing activities in them, but the poet is going about in vain in the silent street. He does not know where his destination is. What is in no hurry to reach there. He simply seeks some temporary shelter but not permanent because he knows that he is at the edge of death. Some questions that had been given in your textbook. What are the memories that the poet talks about in the poem? So we had discussed in detail, so you can write some of those memories which he had written in that poem. What kind of atmosphere is created? कौन सा atmosphere एरी है, सैड है, नॉस्टैल्जिक है, क्या है वो आपने बताना है. व्हाट मेक्स द पोइट टायर्ड? विच थिंग्स मेक पोइट वेरी टायरसम, वेरी दैट exhausted? What has darkened the evening of poet's life? Discuss the poet's regret in the poem. कौन कौन से उसे किस किस बात का उसे अफसोस है. तो ये पोएम जो है आज हमने कंप्लीट की. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. थैंक यू वंस अगेन.